everyone, welcome to our YouTube channel. I hope you guys are doing well. Let us solve some PYQs related to CTET. So the first question that is in front of you is this one. Which of the following is not true of language and acquisition? Language और acquisition के बारे में क्या true नहीं है? All children can learn many languages if given opportunity and environment. First language interferes in the learning of the second language. Language learning should begin from meaning and move to understanding from. ठीक है, then we have the first language support learning of the second language. इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है about language as well as acquisition? All children can learn many languages if given opportunity and environment. Don't you think this is true? Then we have the first language that interferes in the learning of the second language. Language learning should begin from meaning and then move to understanding form. ये form होना चाहिए. Then we have the first language that support the learning of the second language, which is not true. Let us see the right answer. We have a B as the right answer. The first language interferes in the learning of the second language. This is not true about language and acquisition. बाकी सारी चीजें बिल्कुल true है. The second question, which of the following is not the characteristic of language? इनमें से कौन सा language का characteristic नहीं है? Language is symbolic, language is static, language is social, and language is systematic. So we all know that language is symbolic because हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम multiple rules, regulations सीखते हैं, तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक particular language आपने learn कर लिया grammar rules के साथ, वो होता है. बट लैंग्वेज क्या स्टैटिक है? नो. लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है जो आप अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग तरीके से लैंग्वेज लर्न करते हो. लैंग्वेज सोशल भी है, सोशल गैदरिंग्स में भी करते हो, प्लस एक्विंटेंसेस एंड रिलेशंस बिल्ड करने के लिए भी लैंग्वेज यूज होता है. एंड इट इज सिस्टमैटिक. एज आई टोल्ड यू, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इंपॉर्टेंट टू लर्न अ लैंग्वेज. द नेक्स्ट क्वेश्चन. A teacher asks her learners of class 2 to bring their toys related to animals and automobiles to make them learn about vocabulary. What are these toys known as from the language pedagogy context? So language pedagogy context के साथ इन जो learners जो ये equipments ला रहे हैं, जो ये props ला रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? Are they called as teaching aids, realia, real objects or task? What do we call them? A teacher asks her learners of class 2 to bring their toys related to animals and automobiles. So this means that वो क्या use कर रहे हैं? वो कुछ real life के objects use कर रहे हैं. What should be the right answer? The right answer should be B. कुछ भी real life के objects use करके पढ़ाने को हम क्या बोलते हैं? रेलिया बोलते हैं. रेलिया क्या होते हैं? Real life objects जो teacher use करती है in the pedagogy class to teach the students. Real से आता है रेलिया. This is not a teaching aid. And this is not real objects that are used in the class. We have a specific name called as रेलिया. ये क्या होता है? Real life से लिए हुए कुछ objects. For example, यहाँ पे teacher ने animals और automobiles के बारे में बच्चों को लाने के लिए, ऑब्जेक्ट्स लाने के लिए बोला. Then which one of the following is a study skills? इनमें study skill कौन सी है? Listening to a news item to share with friends later, making notes while reading a text on scientific inquiry, preparing a presentation on inquiry based learning होना चाहिए. On inquiry based learning, thinking aloud as one does some actions in a classroom. So इनमें से कौन सी आपकी study skills में आता है? Study skills में से इनमें से कौन सा आएगा? The right answer is B. B is the right answer. That is making notes while reading a text on scientific inquiry. तो note making and note taking दो चीजें हमने क्लास में बहुत अच्छे से करी थी और समझी थी. Note taking, note making, these are, ठीक है, note making, note taking, these are certain important things जो classroom में बच्चे use करते हैं for of course learning. These are the study skills. ये सब study skills है जो टीचर को पढ़ाने में और बच्चे को पढ़ने में क्या करती है? हेल्प करती है. Then positive interference is a kind of, एक positive interference कैसी हो सकती है? Foreign language,
पिक्टोरियल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज। एक टारगेट लैंग्वेज क्या होती है आपकी, पॉजिटिव इंटरफेरेंस होती है। फॉरेन लैंग्वेज अब यू बेसिकली लर्न व्हेन यू हैव टू लर्न अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस। पिक्टोरियल लैंग्वेज तो पिक्चर्स हो गया, प्लस नेटिव लैंग्वेज आप जो आपकी खुद की मदर टंग है वो होता है। टारगेट लैंग्वेज क्या है, जो आपको लर्न करनी है। ये आपकी कौन सी होती है, ये आपकी L2 होती है। दिस इज रेफर्ड टू एज पॉजिटिव इंटरफेरेंस। Which one of the following components is a process in the top-down approach of teaching, learning, of listening? So listening की दो approaches हैं and we did this in greater detail in the class. Top-down या down to top. So उनमें से यहाँ पे कौन सा पूछा है, components पूछे हैं, is that what all of like इनमें से कौन से are the components in the process when you are studying according to the top-down approach to teach listening? Recognizing prominent details, recognizing the topic, discrimination between annotation and compounds that are there, discrimination between phonemes. इनमें से कौन सा आएगा? Which one of the following components is the process in the top-down approach to teaching, learning of listening? The right answer is B. B right answer है. The first thing that you do is recognizing the topic. Then mechanics of language in speaking skills includes social and cultural rules of using language. Then we have script, words and sentences, pronunciation, grammar and vocabulary, and we have the clarity of message. So इनमें से कौन से मैकेनिक्स हैं ऑफ लैंग्वेज व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग स्किल्स? आप किसी को क्या कर रहे हो, बोलना सिखा रहे हो, स्पीकिंग स्किल्स। So the right answer would be C would be the right answer. सबसे पहले you will work on the pronunciation of the person, grammar as well as the vocabulary. Mechanics क्या होता है, rules, regulations. How will you go about with the studying or the teaching of this very important skill called as the speaking skill. So कौन सी skills होती है? We have the listening, speaking, reading, writing. These are the skills and इनसे काफी सारे questions आते हैं। जैसे for example यहाँ पे speaking skills से आ गया। So you should know the skills as well as the sub skills as well. Okay, so these were certain important questions. I hope you understood. If you have any doubt, you can ask me that in the comment section and I'll surely reply to you. Thank you and have a wonderful day.